جو لوگ کر رہے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے، حکومت پنجاب ذمہ دار ہے. ماشاءاللہ. ذرا پڑھ لیں آگے. No tangible evidence surfaced during the course of the proceedings of the Commission against any official, except one or two, as all the officers were acting under the overall policy guidelines of the federal government and the government of Punjab. The policy adopted by both the governments was to exercise restraint and resolve the issue through dialogue and peaceful means. However, the responsibility and liability on this account rested with the respective governments, in particular Punjab, acting through Rana Sanaullah of that time. The Commission observed that the situation was being controlled by یہ کس بیسس پہ بات کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں وائلیشن آف اینی لا. اگر 3 پولیس والوں کو یہ نہیں پتا ہے لا کیا ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ My Lord, I think they erroneously proceeded. Law means Pakistan Penal Code. Law means, I don't know, crime, Pembra violation ordinance. Right to assemble or right to protest is a right guaranteed. It's only when this right translates into affecting other people's right or affecting the fundamental rights of the other person, that is when the state however the responsibility and liability on this account, responsibility کی بھی ہم نے نہیں پوچھی، ہم نے پوچھا violation of law کا. وہ سارا اس چیز پہ سر یہ جو لگتا کیا کہ particular پنجاب ہاں کیوں نہیں روکا، یہاں کیوں آنے دیا. یہ ساری جو اس کے نیچے فائنڈنگ ہے، اٹ از پروسیڈنگ آن دا پریمس کہ آپ نے ان کو وہیں کیوں نہیں روک لیا، لاہور میں، اسلام آباد کیوں نہیں آنے دیا. یہ کون سا ٹرم آف، یہ پہلی بات، یہ کون سا ٹرم آف ریفرنس ہے؟ اور یہ تو آئین کے، آئین تو فریڈم، رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ دیتا ہے ہر شہری کو. سب کچھ ہے، وہ اس سے تو نہیں روکا جا سکتا. وہ خوشی سے آئیے، جائیے، احتجاج کیجیے اپنا احتجاج پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں روکا. ہم نے یہ کب پوچھا کہ کیوں نہیں روکے والی بات؟ بھائی رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہم نہیں روک رہے ہیں، ہم تو بڑے کلیئر ہیں. رائٹ ٹو پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے، اس کا حق آپ کو جمہوریت دیتی ہے، آئین دیتا ہے. اب کون سی شک ہے آئین کی؟ آرٹیکل 15 ہے شاید. جی سر، فریڈم آف موومنٹ. مطلب اگر پولیس والے آئین بھی نہیں واقف ہیں اور رپورٹ ایسی بنا کے دے رہے ہیں ہمیں، پڑھ لیں. جی، آرٹیکل 15. Every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restrictions imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof. And then Article 16. جی سر. Every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. یہ کہہ رہے ہیں کہ آ ہی نہیں سکتے پنجاب سے اسلام آباد میں، یعنی کہ وہ ایک نئی چیز جنم دے رہے ہیں کہ جی، اور یہ سارا قصور ایک شخص کا ہے. وہ شخص کون ہے جن کا نام لکھا ہے انہوں نے؟ پرٹیکولر پنجاب ایکٹنگ تھرو ہوز رانا ثناءاللہ. He was Minister for Law at that time in Government of Punjab, sir. And he was chairing the committee. Government of Punjab in acting through, مطلب یا تو چیف منسٹر کا نام لکھیں، ایکٹنگ تھرو رانا ثناءاللہ. ان کو کیا اس وقت ایک کمیٹی پنجاب میں بنی تھی لا اینڈ آرڈر کی، which was headed by the law minister at that time. یہ کون ہے؟ مجھے تو تعجب ہو رہا ہے یہ رپورٹ پڑھ کے. وہ سارا پریمس ہی فلاڈ ہے. وہ اس بات پہ سارا فوکس ہے کہ ان کو وہاں سے یہاں آنے کیوں نہیں دیا. انفیکٹولی پریمس کیا روک سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں روک سکتے. آپ کوئی جانا چاہے جائیں، انلیس وہ کوئی جا رہا ہے بندوقوں کے ساتھ، تو الگ بات ہے. وہ ہے. اور کسی دوسرے کا، یعنی ریزنیبل ریسٹرکشن یہ ہو سکتی ہے کہ پبلک کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ آپ پھر نہیں اس میں. کوئی کہہ رہے میں جا رہا ہوں پروٹیسٹ کرنے، بھائی آؤ پروٹیسٹ کرو، مگر that doesn't mean you take the law into your own hands. ٹرم 5 کا ذرا کنکلوژن دیکھیں کہ بڑا عجیب سرپرائزنگ ہے کنکلوژن. پیج 133 پہ ٹرمز آف ریفرنس کا 5 کا کنکلوژن، آخری 2 لائنیں. The Commission found violation of this important article of the Constitution as well as oath provided in the 3rd schedule of the Constitution of Pakistan. تو آگے کیا وہ آرٹیکل 5 کو سر، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ. نہیں ذرا آپ دوبارہ پڑھیں. جی. The Commission found violation of this important article of the Constitution as well as oath provided in the 3rd schedule. کہ جملہ تو کم از کم پورا بنا لو نا، کس نے وائلیٹ کیا ہے اوتھ؟ اردو میں لکھ دیتے اگر ان کو انگریزی ان کی کمزور ہے اتنی. کیا جملے کا مطلب کیا نکلا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے جملہ. I don't exactly know. وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے آرٹیکل 5 اینڈ اوبیڈینس ٹو دا لا
फाउंड वायलेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल, भाई बताओ ना, यही तो आपसे पूछ रहे हैं किसने किया। वो कह रहे हैं आने क्यों दिया इस्लामाबाद, ये तो फिर आप खुद वायलेट कर रहे हैं आइन में। हमने इस जजमेंट में कहाँ लिखा था कि उनका हक नहीं आने का? हमने तो बल्कि ऑन द कॉन्ट्री लिखा था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। एंड ओथ ऑफ द थर्ड शेड्यूल, ये किसकी ओथ की बात कर रहे हैं? तो थर्ड शेड्यूल में आई थिंक वो तो सारे ओथ उधर है ना, किस शख्स की ओथ की बात हो रही है इधर? I think he is referring to paragraph E में, the preceding paragraph, the law minister who was instrumental, they say, in shaping the policy of the government of Punjab. पॉलिसी और ओथ में उनको फर्क नहीं पता है। I don't know what sort of report this is. कमीशन This को also बड़ा does not bold then- होके रिकमेंडेशन देनी थी, और मुझे नहीं पता कि किस बात का खौफ है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला वाला पढ़ जी। टर्म अभी तक तो मुझे कुछ इसमें नजर ही नहीं आया। Fixed responsibility of any person and of government officers, including those working with intelligence agencies. So इसका भी जो conclusion है following page पे, says that the then IG Punjab is held along with provincial government is held responsible. ये तो लगता है कि उनको कोई बोझ है पंजाब से कमीशन मेंबर्स को। Entire report proceeds on the premise that उनको इस्लामाबाद जो आने देना है, this is something they are going to inquire into. इस्लामाबाद ही पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो अगर राइट पंजाब में भी कर सकते हैं, राइट इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं। सिर्फ इस एक बात पे लग रहा है, इस्लामाबाद मत आओ, बाकी जगह कर लो एहतजाज। वो ये नहीं लग रहा है कि जब वो यहाँ आ गए थे तो जो यहाँ आकर किया उसके ऊपर क्या किया, वो ये it's just जो इनकी कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस हैं, मादरत के साथ उर्दू में एक जुमला है नज़ला गिराना, वो सारा नज़ला जो उन्होंने गिराया है ना, वो पंजाब सरकार के ऊपर गिराया है। नहीं मतलब पंजाब सरकार क्या प्रोटेस्ट कर रही थी, वो स्टोन पेल्टिंग कर रही थी, वो गाड़ियों को आग लगा रही थी, मतलब So the actual events which took place after the sit-in, which resulted into violation of all the fundamental rights which your judgment कौन refers पंजाब की to. सरकार कौन थी? So उस वक्त chief minister was Mr. Shehbaz Sharif was the chief minister Punjab at that time. कलम ये तो मानता हूँ कि आपकी हुकूमत ने इंटरफेरेंस नहीं की, ये सारी रिपोर्ट उन्होंने उनके खिलाफ लिख दी है। अब वो उन्होंने ये कहा कि आपने उनको मतलब ये तो आप बिल्कुल इंटरफेरेंस आपकी इसमें नहीं थी, ये शायद सरकार को शायद इस बात का इसका इन्फ्रेंस एक ये है कि जी आपने इंटरफेरेंस नहीं की उनके राइट टू मूवमेंट और असेंबली में। क्या व्हाट इज दिस? अच्छा आगे पढ़ते हैं। 7 to determine as to whether any disciplinary proceedings or other legal action is required to be taken against any of the aforesaid is found involved. इसका Establishment division यही सर यही है सर। conclusion The है establishment division and the provincial government may like to determine जी सर आखिरी 5 लाइनों में कंक्लूजन है, वो पढ़ लें। दी कमीशन ऑब्जर्व्ड से पढ़ लें जी, ये उसका जो नंबर 6 concluding the commission observed that available reports of the IB and from other sources were not properly utilized. The IB reports are available on record forewarning the government of the catastrophic effects of the activities of TLP, requiring preventive action which was missing. For that missing action, the then IGP Punjab is held along with provincial government is held responsible. तो ये चले, अगर ये इसी मिस अप्रीहेंशन में इस तरफ चले गए तो उनको बताना चाहिए, ये करना चाहिए था, 2 ये चीज और 3 ये चीज करना चाहिए थी, वो भी नहीं बता रहे भाई। आप अगर आप आईजी पुलिस पंजाब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहे हो तो आप बोलो कि ये उसको करना चाहिए था, वो भी नहीं बता रहे हैं आप। कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसी रिपोर्ट है ये, इनकी कि आपस में कोई राइवलरी तो नहीं थी, ये भी तो पुलिस ऑफिसर से। तो लगता है कि वो पता नहीं कोई आईजी पुलिस कौन था उस वक्त का आईजी पंजाब, तो लगता है सारा उसने उन पे रख दिया है कि भाई पुराने स्कोर सेटल कर रहे हैं कमीशन वाले उनसे। फिर अगर यही बता दें अच्छा उन्होंने क्या करना चाहिए था नहीं करता, अगर मैं होता उनकी जगह मैं ये करता, अच्छा भाई चले, ये उनका मैंडेट था भी नहीं, मगर अगर इस तरह वो जाना चाहते हैं तो पूरी बात तो कर दें कम से कम। अगला पढ़ते हैं। 7 to determine as to whether any disciplinary proceedings or other legal action is required to be taken against any of the aforesaid if found involved.
अब 6 और 7 इंटरलिंक्ड हैं. Yeah. The establishment division and the provincial government may like to determine action in light of the evidence floating in the report. अभी प्रपोज मॉडल डाल दिया इधर उठा करके. What sort of report is this? अगला पढ़ते हैं. To examine and if required recommend measures which must be taken by police and other law enforcement agencies and departments with regard to handling of rallies, protests and sit-ins. इधर ये क्या फरमाते हैं? So sir, it's the last अच्छा, 3 नहीं, वो lines पिछला वाला of जो para B. 7th वाले में उन्होंने क्या लिखा था, जरा वो पढ़ने में 7 मिस कर दिया.